ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। अपन लोग वापस आ गया। आज फेस कैम नहीं होगा, पहले बता दूं। मेरा वेब कैम वगैरह मैं लेकर तो आया हूं अपने साथ, बट अभी मैंने उसको सेट ही नहीं किया और मुझे लग भी नहीं रहा कि यहाँ पे बस एक दो हफ्ते ही रहना, तो उसको सेट करना वर्थ इट है कि नहीं। कल देखता हूँ, कल मैं दिन में अगर सेट कर पाया ग्रीन स्क्रीन वगैरह तो प्रॉपर ग्रीन स्क्रीन वगैरह करेंगे अपन लोग लाइव। माइक आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? ये माइक है भैया लॉजिटेक जी प्रो एक्स का। माइक को पोल्यूशन हो गया क्या? बाबा साउंड, वेट लेट मी लिसन टू इट। मैं सुनता हूँ कैसी आवाज आ रही है। हेलो, ओह शिट। अब आएगी ना असली आवाज। सॉरी गाइस, सॉरी। अब कैसी है? अब ठीक होगी हाँ? थोड़ा वॉल्यूम अपना माइक का और कम कर देता हूँ ताकि कानों में ना लगे। बाय डिफॉल्ट मेरा लैपटॉप का माइक सेलेक्ट हो गया। एक्चुअली मैं इतनी देर से माइक ही ट्विक कर रहा था मेरा। ये हमारी कस्टम प्रोफाइल है, अपन ये यूज करते हैं सेक्सी वाली ब्लू वॉइस। हाई करो वॉल्यूम। अभी तो ठीक है, अभी मेरे ख्याल से ज्यादा ना लो है ना ज्यादा हाई है। -2.5 dB पे रखा मैंने। अब सही है ना? ओके गुड। ओके तो आज अपन लोग खेलने वाले हैं वॉच डॉग्स लीजन RTX ऑन के साथ, समझे? बट बिफोर आई हैव सम अर्जेंट बिजनेस टू अटेंड टू। नॉट दैट अर्जेंट। एक सेकंड रुको, मुझे डिस्प्ले कैप्चर टेम्परेरी ऑफ करना पड़ेगा। तुम लोग चैट पढ़ लो। फेस कैम का, फेस कैम है नहीं मेरे पास, है बट मैंने सेटअप नहीं किया, मुझे टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, और मुझे फटाफट लाइव आना था तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, फेस कैम नहीं करता यार, टाइम लगता है और उसको सेट करने में पूरा, मतलब बैकड्रॉप वगैरह सेट करना पड़ेगा। मेरा बैकग्राउंड बहुत गंदा है यार, ठीक है? बहुत गरीब फैमिली से तुम्हारा भाई, समझे? दिक्कत आती है। बोर्ड कैम वापस कब जाओगे? 1 और 2 वीक्स। ओहो RTX XCS ब्रो, RTX का खेलेगा इस हमारा जो लैपटॉप है भैया, उसके अंदर है 2060, तो फुल RTX का खेलेंगे मस्त मौज में, है ना? बढ़िया। और दोस्तों क्या चल रहा है अभी? तुम्हारा कोई भी क्वेश्चन था भाई, मैं आंसर देने के लिए बैठा हूँ इधर। 5 मिनट कम बातचीत करेंगे, उसके बाद देखते हैं। हैप्पी दिवाली एवरीवन, हैप्पी दिवाली सबको। आर्टिकल पे आपको विश्वास है? गवर्नमेंट का सीन मुझे नहीं लग रहा है कुछ है, वरना 100 करोड़ वाला नहीं करते। गाइस देखो, अभी इंटरनेट पर ना सीन क्या है, सब लोग ना बस भेड़ चाल में घुसे पड़े हैं और सबको इस टाइम मतलब उस पाए में से एक टुकड़ा चाहिए जो पबजी मोबाइल लेकर आ रही है, चाहे वो व्यूअरशिप का हो, चाहे वो रेवेन्यू का हो, चाहे वो क्लिक्स का हो, समझ रहे हो? तो अभी जो भी मीडिया है ना, मैं कहूँगा मीडिया पे तुम विश्वास मत करो, जब जो होना होगा अपने आप हो जाएगा और सबसे पहले तुमको ही पता चलेगा। ये मत सोचना कि तुमसे पहले किसी को पता नहीं चला, सबसे पहले तुम लोगों को पता चलेगा। बाबा हु विल बी न्यू प्लेयर इन गॉड लाइक? आई हैव नो क्लू एज ऑफ राइट नाउ। बहुत प्लेयर है यार जो मतलब खुले बैठे हुए हैं, वो किसी को भी ले सकते हैं यार। मेरे ख्याल से ये बैन से पहले इन लोग सोल अमन के साथ चल रहा था, बट आई थिंक वो जमा नहीं पूरी तरह, तो मे बी सोल अमन इज आउट ऑफ द लिस्ट। बट बहुत लोग हैं यार, किसी के साथ किसी को भी ले सकते हैं टीम में, वो उसमें क्या है ना? ऐसे कुछ भी नेसेसिटी नहीं है कि हाँ इसी को लेना है, इसी को लेना है ना? उसको टाइम लगता है दोस्तों।
और कुछ भी पूछो भाई। ओ यस से हु विल लीव गॉड लाइक देन। इसके बारे में भी मुझे आइडिया नहीं है गाइस। अगर तुमने मेरा इंस्टाग्राम देखा है तो तुम्हें पता होगा कि मैं गॉड लाइक पे एक टेक्निकल बंदा हूँ, समझे। तो मेरे को इतना कुछ बताया नहीं जाता ना, हम ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं, समझ रहे हो। तो जब हमें बताया नहीं जाता तो हम क्यों करें। ओके आई एम अनएबल टू गेट इट टू वर्क, तो छोड़ते हैं यार। साला मैं डोनेशन वाला सॉफ्टवेयर चालू करने की कोशिश कर रहा है जो कि चालू नहीं हो रहा। तो गाइस प्लीज़ आज कोई बंदा पेटीएम या पीयू डोनेट मत करना, पहली बता रहा हूँ, अलर्ट नहीं बजेगा, ठीक है। प्लीज डोंट डोनेट। चलो अपन लोग चलते अपनी गेम की तरफ। गेम को फटाफट डाल दो कैप्चर पे, तुमको मस्त सेक्सी सेटिंग दिखा दो गाइस। आज हम खेलेंगे कीबोर्ड माउस के साथ, कीबोर्ड माउस का फुल प्रोसेशन एकदम बुम बाम भाई। डीएलएसएस के साथ खेलेंगे, डीएलएसएस डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। आई थिंक हमें अपना म्यूजिक बंद कर देना चाहिए ना, इस गेम के म्यूजिक में ये भाई फुल बुम बाम करते हैं। गाइस तुमको मैं ग्राफिक सेटिंग सिखाता हूँ जिस पे हम खेलने वाले हैं। एक तो इमेज है ना इस गेम की, मुझे इमेज बहुत ब्राइट लगी, मैं इसको ना 45 कर दो। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट लग रही थी मुझे गेम। मैं जब उसको बेंचमार्क किया था ना, अप्लाई तो हुआ ना, टेल में अप्लाई नहीं हुआ, हो गया। गाइस ये देखो ग्राफिक सेटिंग्स में हम ये खेलने वाले हैं। ग्राफिक्स क्वालिटी प्रीसेट है कस्टम, जियोमेट्री डिटेल वेरी हाई, एनवायरनमेंट हाई, टेक्सचर रेजोल्यूशन हाई, फिल्टरिंग अल्ट्रा, शैडोज हाई, हाइलाइट शैडोज ऑफ, रिफ्लेक्शंस हाई, डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन, मोशन ब्लर ऑफ, ब्लूम ऑफ, एम्बिएंट ओक्लूजन। वैसे मुझे एम्बिएंट ओक्लूजन पसंद नहीं है बट ठीक है। टेक्सचर एंटी एलिसिंग, नहीं टेक्सचर एंटी एलिसिंग के बोल रहा हूँ, छोड़ बोलते हैं इसको, ट्राइलिनियर एंटी एलिसिंग, बेसिकली एंटी एलिसिंग, ठीक है। सब सरफेस स्कैटरिंग हाई, रे ट्रेसिंग मीडियम, ये बोलते हैं इसको हम आरटीएक्स मीडियम, समझे। एक सेकंड रुको ना, ऊपर ओबीएस ढंग से नजर नहीं आ रहा, कम नजर आ रहा, सही है। और सबसे बढ़िया चीज भाई डीएलएसएस, इसको अगर मैं परफॉर्मेंस कर दूं वो हमारे फ्रेम रेट बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। एक काम करते परफॉर्मेंस से कर देते, क्योंकि हम रे ट्रेसिंग के साथ खेल रहे हैं, रे ट्रेसिंग बहुत खाएगी हमारे एफपीएस। तो ये थी अपनी बकचोदी। नाउ लेट्स गेट इनटू इट। कैंपेन खेलेंगे अपन लोग, न्यू गेम। ये क्या, परमाडेथ मोड ऑन, मरे तो मरे। बाबा सबनॉटिका की स्टोरी का क्या हुआ है भाई, इसका अपडेट नहीं है यार भास्कर मंगलानी उसके आगे। मैंने अभी तक जितनी भी खेली है सबनॉटिका में उसकी एक पूरी वीडियो सीरीज बनाने वाला हूँ मैं, हाइलाइट्स, जिसमें तुमको स्टोरी ना पता लग जाएगी विद इन 1 आवर। तुमको इतनी सारी स्ट्रीम्स ही देखनी पड़ेंगी मेरी 12-13 घंटे की। 3-4 वीडियोस बनाऊंगा जिसमें तुमको 1 घंटे के अंदर सारी स्टोरीज पता लग जाएंगी। Ah, London. What a town. History around every corner and a tourist photographing it. Pub serving up a pint and a smile. एक सेकंड अगर मैं पीछे बैकग्राउंड में क्रोम बंद कर दे रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सीपीयू खा रहा हूँ मेरा। एक आध चीज़ और क्लोज कर दे रहा हूँ जो ज़्यादा सीपीयू खा रही है ना, क्योंकि दिस गेम इज़ वेरी वेरी डिमांडिंग ऑन द सीपीयू। तो मुझको कुछ भी नहीं देना अभी सीपीयू को। ओके बस वॉचडॉग्स है मेरा हेडफोन का सॉफ्टवेयर है एंड नथिंग एल्स। गुड, चलो वापस गेम की तरफ चलते हैं। All that music, theatre and art, and multiculturalism, and the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only took 12,000 years to build it up, and 1 night to tear it all down. ये आ गया CTOS का ड्रोन। मेरा दिल घबरा रहा है, गेम 30 FPS पे चल रही है अभी तक। हेलो बाबा, हेलो डार्क साइड। बाबा बिना फेस कैम सब कुछ सुना सुना लग रहा है भाई। अभी फेस कैम है मेरे पास बट मैं सेट नहीं किया। Perimeter security's down, but plenty of your flying friends about. Fucking hell.
Dalton, no time to waste. Yes, ma'am. Ubisoft presents. I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't rushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley. The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. ओके अब शायद इन गेम फुटेज है फुल गाइस DLSS एंड रे ट्रेसिंग के साथ ओके भाई स्मूथ 70 फ्रेम्स शैडोज कहाँ है बट हेलो गेम वेयर आर द शैडोज द फक इसके लिए पैसे नहीं दिए मैंने ओके Stand down, mate. अब ऐसे That क्राउच hurt कैसे करता you है more than it hurt me. Do us a favor and जाना ना keep मैं। it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? ओके तो वॉल्ट करने का अपने उधर से कैसे गेम मैं स्टार्टिंग से इसलिए खेल रहा हूं तो मेरे पास मेरी सेव फाइल नहीं है और दूसरा मैं कीबोर्ड से मुझे इस गेम खेलना नहीं आता होल्ड मिडल क्लिक अनलॉक डोर टू रिवील द लिंक ठीक है तो मुझे जाके इसको अनलॉक करना है चलो बेटा छुट्टी हो जाओ है नाइट नाइट तू भी गुड नाइट हो जा ठीक है दोस्त वो नोड कहाँ गया वो नोड यहीं पर तो था कहाँ गया वो नोड ओ ये रहा They've got loads of dead set gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was here. Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. बाबा मैं ही मोड बन सकता हूँ क्या तू नहीं भाई अभी तो नाम उसका बाबा fuck चिकन me. हंडी खाएगा The entire place is rigged to blow. Jesus, those canisters. Bagley, is that... RTX nitrogen. Enough to level Parliament. Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. They've staged DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. Not if you get to that detonator first. अगर लंदन की पार्लियामेंट है जिसको फोड़ने में लगे हुए हैं और यहाँ पर सारे डेड सेट की गियर फैलाई हुई है इन लोगों ने तो जब फटेगा तो सब कुछ जो है ये डेड सेट के ऊपर डाल देंगे ताकि जो पब्लिक का जो भरोसा जो ट्रस्ट है डेड सेट के ऊपर से उठ जाए और उनको एक्टिविस्ट की जगह टेररिस्ट समझना शुरू कर दें बाबा राम 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 अनमन भी प्लीज अरे अनमन क्या होता तुझे अगर तू हुआ जिसको मुझे लग रहा था बाबा आपके लैपटॉप में एसी वाला चलेगी ना इसी में भी चल जानी चाहिए Right in the House of Commons. Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the centre of government. Deactivate the detonator.
मैं ना एक बार गाइस गेम का ना फ्रेम रेट लिमिट करना चाह रहा हूँ 60 क्योंकि मुझे लग रहा है मेरे सिस्टम पे कुछ ज़्यादा ही लोड जा रहा है अभी, कुछ ज़्यादा ही लोड जा रहा है इस वक्त। मैं देख पा रहा हूँ जितना मेरे ऊपर मैट्रिक्स में लगाया हुआ है ना। आई थिंक वी शुड एनेबल एन FPS लिमिट 6G, हार्ड लॉक 6G। बहुत ज़्यादा लोड जा रहा है मेरे सिस्टम पे सब। रिड्यूस इट अ बिट। चलो आपके माउस का क्या प्राइस है? आई थिंक 4-5 हज़ार होगा। Logitech G Pro है। I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm gonna need some help with this. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. I'm in. And the bombs have just armed themselves. Well, that may complicate matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can, but I might also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting on it. Company at our back door. Shit. Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you interrupt me with questions. All right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. Fuck. They're on me. I'll try and hold them off. गाइस वैलहल्ला तब खेलेंगे जब मेरे पास होगा रोकड़ा खरीदने के लिए। Let's have a look around. Eyes peeled. There. Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. भाई मर जाओ हेडशॉट्स पे। भाई कवर ले। मुझे कवर लेना नहीं आता। ओके, लेफ्ट कंट्रोल। Problem, Dalton. I need your physical appendages now. What's wrong? There are 3 slots on the left. One of them is the receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull the wire. If this gets me blown up... Bombs defused. See? That wasn't so bad, was it? Bagley, you bastard. You nearly gave me a bloody heart attack then. Whoa. Zero day. Well, what the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Fucking hell, we need to get the word out. Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the town conference. We have to do something. I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it... I can shut it all down. Sabine! Fuck! Dalton, we're breached! Go! The roof! I think इस गेम कुछ ज़्यादा लाउड है ना। गन शॉट्स के मामले में थोड़ी सी वॉल्यूम तुम लोगों के लिए कम कर देता हूँ। I hope अब ज़्यादा लाउड नहीं होगा। मैं देखा जो मीटर था बिल्कुल रेड हो गया था। तो अब अपने को छत पे जाना है क्योंकि यहाँ ऊपर एक टावर है। We're being raided. It's a bloodbath.
Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need him for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. Wipe him. Yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. Dalton, if this goes. It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. नाइस, ये तो पूरी फील्डिंग बिठा के बैठा है मर गया। हमें भी हेडशॉट मारना आता है दोस्तों। Somebody get out. Anyone. तेरे बंदूक उठा सकता हो क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वेपन दे दो यार। तो गाइस, छत पर ना एक टावर है जो बाकी बॉम्ब साइट्स को ना सिग्नल्स भेज रहा है, तो हमें उस टावर जाके शट डाउन करना ताकि बाकी एरियाज में बम ना फटे। Where are you? Okay. Bingo. No. Well done, Dalton Wolf. I'm impressed. The fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before, hmm? The Plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. 0 day. It's time for a hard reset. Oh my god. भाई माँ बहन कर दी बेचारे की। A series of explosions devastated 3 sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but it is expected. Mourners gathered for a series of candlelight vigils that brought closure to thousands of families and indeed to an entire city. London is now laser-focused. Today at 10 Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses failed. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of 4 of London's 5 largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment. News outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... Reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet,
that terrorist group DedSec were framed for the bombings have been roundly rejected. Our own reporters could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. तो गाइस बताओ भाई चैट में किसको किसको समझ आया और किसको समझ नहीं आया। अभी ये कट सीन का मतलब क्या था, मैं एक बार जानना चाहता हूँ। I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colours. It's terrifying to think we harboured such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you. But Even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next I have Crypto King. ओके दिखाया मुझे भी फ्रेम ड्रॉप से गए थोड़े से, बट अभी चालू होना चाहिए। Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. They want to keep us scared, harness us with mind control, suck every last ounce of usefulness out of us, and even in death they'll sell off our bodies. And what do you suggest we do, Crypto King? Go underground. Deep enough, no electric signal can get you. It's the only way. Well, thank you to all of our callers today, and thank you for tuning in and scouting for the truth along with me. Next week, Buccaneer Radio will be diving into the Albion Corporation. Just who are these men and women being paid lucrative amounts for the city's defence? Are they protecting us? Protecting London? Or someone else's interests? See you next week, fellow अब ग्राफिक सेटिंग सिखा दो, एक बार दिखाता हूँ। Shit. Situation is worse than I thought. But there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. तब अपने को कैरेक्टर चूज करना मिलेगा और ये लिस्ट कंप्लीटली डिफरेंट है भाई लास्ट टाइम से। वीडियो गेम डिजाइनर, फास्ट हैकिंग, शॉर्ट हैक कूलडाउन्स, टैटू आर्टिस्ट, ऑटो मैकेनिक, फॉर्मर cryptographer, 6G data plans, ultra-wide professional sports vehicle, social media influencer, makeup artist, physician, activist, internet celebrity, Howard Biswas। अबे तो इंडियन है बे। सारे बाइक वाले इंडियन क्यों होते हैं यार? Red Hall, police contact, shorter team arrest time, songwriter,
कौन सा प्लेयर लेगा इस? हाँ मुझको भी जो समझ आ रहा है वो तो भाई एक तो ये है डंकन पावलोव, वीडियो गेम डिजाइनर, ठीक है, फास्ट हैकिंग, नहीं तो फिर ये जो कि इंडियन है बंदा, शक्ल से भी लग रहा, नाम से भी, बाइक भी चलाता है, ते कहाँ गई ये गाड़ी वाली 24/7 पॉडकास्टर बेस्ट है। रुक जा, पॉडकास्टर कौन है ये 24/7 पॉडकास्टर थोड़ी है, तो पॉडकास्टर लिखा हुआ है। ओए तेरा नाम में 24/7 है, ड्रोन वाला बेस्ट है। ठीक है, वैसे बाइक मुझे समझ में नहीं आई थी, हम ड्रोन वाला लेते हैं, चलते रिसन के देखते हैं। देखने में कूल लग रहा। Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, DedSec रे needs ट्रेसिंग you. देख लो दोस्तों। I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. रे ट्रेसिंग गाइस। Sure, whatever. मुझे ऐसा क्या लग रहा है, मुझे रे ट्रेसिंग बंद करनी चाहिए। तो भाई फ्रेम रेट 20 हो गए, क्या मजाक है ये। जब मुझे रे ट्रेसिंग यूज नहीं करनी थी, रे ट्रेसिंग बंद करके देखता अगर मैं ऑन द फ्लाई बंद कर सकता हूँ तो। और रे ट्रेसिंग बंद करने के बाद हम 30 फ्रेम से 40 तक आ गए हैं लगभग। मेरे 1070 से बेटर चल रही है इसमें लैपटॉप पे गेम। हैप्पी दिवाली खुशवेल। तो वो ग्राफिक्स देखी नहीं तूने अभी सेटिंग्स वाले, अभी तो खोल के ग्राफिक्स सेटिंग्स होना। मैं हाई वेरी हाई और मीडियम का मिक्सचर खेल रहा हूँ अभी। कुछ चीज़ें वेरी हाई है, कुछ चीज़ें हाई है, कुछ चीज़ें मीडियम है। ये गेम दिखने में भी अच्छी लगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी मिला। आंटी गायब हो गई। ओ भाई तो बहुत सारे आ गए। बड़ा बंदूक वगैरह नहीं है मेरे पास, मामा ने कर देता। ओ बंदूक वाला था। भाई गेम क्या चाहती है, मैं ऊपर कहां से जाऊं? I've downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. Oh shit! I've been caught up in some spy movie. This is mental. भाई बकचोदी, गलत टाइम पे पीछे पड़ना ना मेरे। हेलो, मैसेज पढ़ रहा मेरा अभी आया जरा फर्स्ट मैसेज। ये लो बाहर निकले दल्ले।
and exit the area right now. That's pathetic. Oh, that's sad, mate. One of Sabine's, are you? I'll see you downstairs later then. You got this, blood. Stay cool. You're hard. Yo. Anyone here? Better turn on the juice. तो जरा मैं अपने AI असिस्टेंट को रीबूट करना अब। कल दिन में भी खेलेंगे इस गेम को, दोनों टाइम खेलेंगे। तो दिल्ली में ये गेम कंप्लीट करूंगा। No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Bro, it's cool. You know Sabine? She's my mate. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. भाई सस्ता टोनी स्टार्क का सस्ता जारवेस कब वापस जाएगा पुणे? नेक्स्ट ट्यूसडे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट संडे। Ah, that's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. So, Bagley Bags, if DedSec didn't bomb the city, then who did? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. कहाँ है भाई तेरा टर्मिनल? ओ भाई क्या ही टर्मिनल है? तो मीटअप को कुछ सीना है या नहीं? भाई मैं तुम लोगों से ऐसे ही मिल लूँगा, पब्लिक मीटअप नहीं करेंगे, 4-5 लोगों का ग्रुप बना लूंगा, ऐसे ही अपना मिल लेंगे कहीं पे। Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. Bagley. God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Oh my days. How's a girl like you get out of that clash? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. Yeah, bruv. Look, it's hard out here for DedSec, man. I've always wanted to roll with you lot, but I don't want to get murked or anything, innit? Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance. And it starts with you. What do you say? Well, I guess if I do get murked, it's better to go out fucking blazing. Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec kit. एक्वायर इक्विपमेंट, तो अपने को भैया प्रॉपर हैकिंग इक्विपमेंट मिलने वाला है दोस्तों। टेक अपग्रेड्स, टेक पॉइंट्स, ये सब तो मुझे पता।
इस गेम का स्किल ट्री सिस्टम है बेसिकली, तो मीटअप का कुछ सीन है या नहीं? मैं टू बी ऑनेस्ट पता क्या सोच रहा हूँ भाई, मीटअप करना ही है ना। देख विक्रम, 2 मीटअप करते हैं। एक अपना जो पहले के इक्का दुक्का लोग थे, ठीक है, सोशल डिस्टेंस, लिमिटेड बंदे, मैक्स टू मैक्स मेरे अलावा 5 बंदे और, ठीक है। एक बना लेते हैं ऑनलाइन मीटअप, काम ही खत्म। वैसे ऑनलाइन मीटअप क्या होता है? लाइव स्ट्रीम ऑनलाइन मीटअप ही एक तरह का। ब्रो रीड कमेंट्स मोर फ्रीक्वेंटली, पढ़ रहा हूँ भाई, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। वह पीसी बनाना है मैंने 2020 वर्थ बाइंग स्पेक्स बता दो ब्रो, व्हाट डू यू वांट टू डू? पहले तो ये बता मुझे भाई, कितना कूल म्यूजिक बज रहा है। जस्ट रियलाइज्ड परचेज अ न्यू गैजेट इन द टेक मेन्यू। ये क्या है? इन्फिल्ट्रेटर स्पाइडर बॉट, ये ले लेते हैं, ये अच्छा लग रहा। एआर क्लोक तो बेकार था भाई। इक्विपर न्यू, ओके, टैब दबाना मुझे, एडिट, गैजेट, स्पाइडर, बढ़िया। We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. और अचानक से सब कुछ मिनिमाइज हो गया। पहले गेम क्रैश तो नहीं हो ना? नहीं, गेम क्रैश नहीं हुई। एक सेकंड, मेरे पास एक जुगाड़ है जिससे ना गेम साली क्रैश नहीं होगी। मैं यूबीसॉफ्ट को जाके ऑफलाइन मार दूं ना, तो फिर गेम मेरी क्रैश भी नहीं होगी। सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करने का तू बस, तू है कौन बे? अनबैन मी प्लीज, नाम तो बता अपना। चलो द फक, वाह, आर यू शिटिंग मी? ओके चल गया। And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. मैं ऑलरेडी कूल दिख रहा हूँ, समझा? साला बेइज्जती मार रहा है मेरा ये असिस्टेंट, इतना कूल लग रहा हूँ मैं। मे बी आई कुड यूज सम बेटर शूज, ले लेते हैं। You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how. Nice. And this time the game fucking crashed. इसलिए मैं वो लीजन नहीं खेल रहा था यार। क्या ही जिंदगी है यार। दोबारा चालू करोगे इस गेम? 2 मिनट्स। गेमिंग के लिए बाबा पेरेंट्स ज्यादा पैसा नहीं देंगे तो वर्थ बाइंग स्पेक्स 2020 पीसी। भाई देख, अगर तू ऐसी लेटेस्ट ट्रिपल ए गेम्स खेलना चाहता है ना, वॉचडॉग्स, लीजन, वैलहैला, ये सारी गेम्स भाई अभी एज ऑफ नाउ आर वेरी वेरी आउट ऑफ रीच। तुझे कम से कम 1.2 1.3 एल का पीसी चाहिए अगर तुम इफेक्टिवली इन गेम्स को खेलना चाहते हो अच्छे सेटिंग्स पर। अगर बिल्कुल लोएस्ट पे खेलना है तो 60,000 का पीसी बिल्कुल टट्टी लोएस्ट पे भी उठा लेगा। बट देन वो 60,000 मुझे लगता नहीं अभी स्पेंड करना वर्थ इट है भाई। आई वुड सजेस्ट कि वेट कर, अभी मार्केट में रेट बहुत ज़्यादा हाई है, स्टॉक कहीं भी नहीं है, बेफालतू पैसे खर्चेगा और मार्च का महीना आते होते तुझे रिग्रेट होगा बहुत ज़्यादा। तो इट्स बेस्ट कि थोड़ा वेट कर। Ryzen 5600 का लॉन्च होने का वेट कर। अभी 5600X आया मार्केट में, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव और वर्थ इट भी नहीं है वो। और एनवीडिया की लोअर एंड ऑफरिंग्स और AMD की लोअर एंड ऑफरिंग्स आना वेट करो ग्राफिक्स के मामले में, ठीक है? वो सब जनवरी में अनाउंस हो जाएंगे एंड फरवरी में होपफुली लॉन्च हो जाएंगे और मार्च तक उनके प्राइसेस स्टेबल हो जाएंगे। समझ रहे दोस्त? कैप्चर क्यों नहीं कर रहा? अब करेगा। फेस कैम ऑफ क्यों रखा है ब्रो? आई एम नॉट इन द बूट कैंप, मैं अभी दिल्ली आया हूँ। अब न्यू बूट कैंप कब रेडी होगा ब्रो? से टाइम लगने का,
अभी दिवाली के चक्कर में मामला और डिले हो, क्योंकि देखो रेनोवेशन वगैरह जो काम होता है ना, बहुत लोग दिवाली के टाइम के आसपास ज़्यादा कराते हैं, तो लेबर वगैरह मिलना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इस टाइम पीरियड में, नॉट टू मेंशन कोविड कोरोना वगैरह सब। तो अभी चेतन के घर को बनते बनते मेरे ख्याल से लग जाएगा 1-2 महीना और। डोंट टेल मी मुझे शुरुआत से करना पड़ा तेरी। ये क्या भाई? oops. Oh shit. Whatever. भाई मेरे पीछे ड्रोन पड़ा यार। ये कैसा एम असिस्ट है भाई? कीबोर्ड माउस पे भी एम असिस्ट। नाइस, यही करना चाहता था मैं। अच्छा Yo, anyone here? Better turn on the juice. कोई नहीं, हम स्किप मार देंगे जितने भी अभी तक हमने करे थे ना, सर स्किप मार दूंगा मैं। No DedSec registration detected. Identify yourself or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Bro, it's cool. You know Sabine? She's my mate. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley, DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine? I mean, catch up on what I missed. Ah, that's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for dead. Contact Sabine. देखा skip कर सकता है मैं सब. When you're going back to boot camp, bro, around after 10 days. We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. ये mask है मेरा default. आहा, ये है ना बात. What else? मैंने जूते लेकर दिए इसको. Really? ये जूते लेकर देता हूँ। फेसवेयर भाई, कैसा मजाक है बे। Ubisoft, this is a really bad troll. Yeesh, sexy. You've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only. क्या मिस किया? तूने कुछ मिस नहीं किया। अगर तूने मेरी पहले वाली Watchdogs की स्ट्रीम देखी है तो ट्यूटोरियल खेल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से खेल रहा हूँ अभी गेम को। चलो मैं डॉज वगैरह करना आएगा मुझे कीबोर्ड से। Under my block, find the weak point. Nice one. That's it.
स्टार्टिंग से खेल रहे हैं क्या? हाँ लैपटॉप पे खेल रहा हूँ, स्टार्टिंग से खेलना पड़ रहा है Quick on your और feet कीबोर्ड now. माउस से भी खेल रहा हूँ ना मैं। Create distance. Nice one. मुझे कंट्रोल से मालूम थे। ये तो हो गया ना? हाँ चल बेटे उठ जा। Right, gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Brilliant. I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. तो देखो अब यहाँ पर जो है ना, इसने हमको बेसिकली सबीन ने ये बोला कि you represent DedSec now. इसका मतलब ये है अब हमारे जो एक्शंस है ना इस दुनिया में वो पब्लिक के ऊपर मतलब असर डालेगी। अगर हम मार धाड़ करते हैं, लोगों को बेरहमी से मारते हैं, तो पब्लिक को पता लगेगा कि ये लोग टेररिस्ट है भाई, ये लोग ऐसे वैसे हैं, समझ रहे हो भैया? मगर इज्जत से रहेंगे तो लोग हमें इज्जत की नजरों से देखेंगे। Let's do this. Where do we start? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. Fucking Albion. They're not keeping us safe, they're keeping us unsafe. Am I right? So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing 2 sets of coordinates to your optic. Cheers, Bagley. I've identified 2 opportunities. 1, we're going to disrupt some Albion propaganda. Remind the people it's not Albion's way or the highway. 2, we need intel about Albion operations if we want to throw a spanner in their plans. You game? Oh, fuck yeah. I'll throw spanners all over the fucking place. Brilliant. Let's get the people of London on board. चलो बेटा इसकी छुट्टी। और मैं यहाँ से कैसे जाऊँ? अपने को ऊपर जाने का। टूटने का नाम ही नहीं ले रहा हो। You know what? Fuck it. जो होगा देखा जाएगा। Sending location on a 1033. Advise conditions. Identify yourself. Your mom. Is that enough for a identification, bro? ओ भाई इसको डैमेज ही नहीं हो रहा। धुआं निकल गया बे। How do I get up there? Code 3, closest units proceed to alarm location. क्या अनलॉक किया इसने वैसे? ओ ऊपर जाना रास्ता।
सारा 10 टेक पॉइंट्स के लिए मुझे इतना दूर जाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है दोस्त, चले जाएंगे। Begin searching. यही तो करना था। हैप्पी दिवाली बाबा, हैप्पी दिवाली संदीप। किसी को एल से फर्क नहीं पड़ रहा। How do I exit? There's no sign of them. Send a description with the report. Escape to exit. Let's get out of here. ओ भाई क्या आवाज है गाड़ी की यार। You're listening to the bug. May cause nausea, vomiting and headaches. You're listening to The Bug, the Resistance comedy show brought to you by the Buccaneer Network. I'm Guys, stream lag तो नहीं कर रहे ना? मैं जानना तुम लोगों से एक बारी। Apparently the resistance is Restricted area में पहले ड्रोन यूज करो। ओके। Well, there has been some ड्रोन मैंने अभी यूज करना सीखा नहीं, इसका देखते हैं। And/or terrorist organisation delete according to preference, not preference, sorry, delete according to whether or not you work for the government, SIRS, Bloom, the Kellys, or Albion. According to a SIRS official, DedSec is no longer a threat. Which I guess is true in that it was never a threat in the first place. Reminds me of when my great aunt Gladys had her appendix out. Oh Andy, that surgeon's a real threat, waggling that knife. Oh my god, अभी ये पता है रेडियो वाले ने बोला my great aunt Gladys। भाई क्या ही रेफरेंस है। ग्लैडिस एक और AI था, एक ट्विस्टेड टॉर्मेंटेड AI पोर्टल गेम्स है। भाई क्या रेफरेंस है रे लोग। Anesthetic Gladys. Anyway, if SIRS officials say DedSec is dead and buried, I guess we have to assume that DedSec has never been stronger. But I do worry. I don't think I'm allowed to have fun. Restricted area, scout, scan, use stealth. ठीक है। Albion have established an operational base in the Royal Court of Justice. Bruv, this is bollocks. With Albion in control of the courts, there's like no way for anyone to have a fair trial anymore. Exactly. But it likely means there's information here about how Albion are targeting dissenters, the who and the why. We need that data if we're going to disrupt their operation. Give up now. चलो बेटा, छुट्टी, घर जाओ। और ये बंदूक वाला तेरे को जादू की छप्पी दूंगा पीछे से। ओके, तो यहाँ पे अपने को नोड अनलॉक करने का। थोड़ा FPS ड्रॉप बट चलता है। हाँ यार 29 तक गिर रहे हैं मेरे फ्रेम, बट देख रहा हूँ मेरे पीसी के मुकाबले कितनी स्मूथ चल रहे हैं। मेरे पीसी पे इतने फ्रेम भी नहीं आते थे। 43-45 फ्रेम्स एवरेज कर रहा हूँ DLSS की वजह से। This is resisting arrest. Oh no. चलो बेटा, चलता बन। ये क्या इधर और
Royal Courts number 2. Bax, talk to me. A list of what Albion consider high-value targets that are threats to the peaceful running of London. See here, a journalist, and this one runs a community shelter. Good God, bar your doors. What the shit? All suspected of sowing rebellion or exhibiting tendencies towards... Albion is systematically arresting people even before they rise up. Joke's on them. This list can actually help us find like-minded allies willing to help us. Well done. Now, let's disrupt some of Albion's propaganda and give some hope to the people. You're listening to The Bug. May cause nausea, vomiting and headaches. You're listening to The Bug, the Resistance comedy show brought to you by the Buccaneer Network. I'm Andy. Joining me, as always, Alice. I'm excited to be here. Apparently, the Resistance is not going well. Again? Ram Ram Sa. Ram Ram Nishan Sharma. I'm with Amar Bhaiya and Karam. Delete according to preference. Not preference, sorry. Delete according to whether or not you work for the government, SIRS, Bloom, the Kellys or Albion. According to a SIRS official, DedSec is no longer a threat. Which I guess is true. अब अगर 2020 गेम्स 1080p पर हाई 60 FPS पर सिर्फ RTX DLSS रे ट्रेसिंग ऑन गेम्स खेलनी है तो कौन से PC स्पेक्स लगेंगे? एटलीस्ट एक RTX 3070 चाहिए तुम्हें. अगर 1080p हाई खेलना है तो अभी तुमको 3060 Ti या 3060 का वेट करना चाहिए. यहाँ तक कि तुमको मैं ये बता दूं 3050 भी जो ग्राफिक कार्ड आएगा ना वो भी रे ट्रेसिंग सपोर्ट करेगा. We're living in the self-selected, algorithmically designated information equivalent of a propaganda state, and every Sleeping Dogs और Watchdogs किसका कॉम्बैट एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़िया लगता है तुझे? भाई दोनों गेम्स का अलग-अलग तरीका देखो. Sleeping Dogs में भाई कंप्लीट फिस्ट फाइटिंग है, ठीक है? फिस्ट फाइटिंग, किक बॉक्सिंग ये सब है. लेकिन वॉचडॉग्स में भाई तुम्हारा फिस्ट फाइटिंग तो है लेकिन उसमें तुम्हारे टूल्स हैं, हैक्स हैं, यू नो चीज़ें जो तुमको एडवांटेजेस देती हैं. बहुत सारी चीज़ें जो मतलब स्लीपिंग डॉग्स में भाई सपनों में भी नहीं आ सकती. फास्ट ट्रैवल तो नहीं करना भाई अपने में मेट्रो है तो. बैकयार्ड में देखते हैं क्या. मुझे इसको हाईजैक करना भाई. अटका हुआ इधर है. पाइप चढ़ेगा चढ़ेगा और क्या चढ़ेगा भाई तू. अरे के हसर और क्रॉन्टन कैरम खेल रहे थे थोड़ी देर पहले तो उसको देख के बोला मैं. वाह मतलब वो क्या इंस्टा लाइव कर रहे क्या वो लोग? चलो भाई डिसरप्ट प्रोपेगेंडा. Yes, nicely done. That'll get people's attention. Let them know someone is standing up to Albion. Light the spark that they can stand up to. If nothing else, it'll relieve their eye strain. Now what? Larian call अगला We're मिशन. already seeing results from what you've done. That list we found named a journalist in Camden who's been investigating Albion. We reached out and he's got information that can help us. I think you should meet with him. Send me the deets right now.
यहाँ पे एक टेक पॉइंट है बे, लेकर आते हैं। इसको हाईजैक नहीं कर सकता मैं अब? नाइस, इतने में हो जाएगा। देख तो टेक पॉइंट का है जो मैं छोड़ के आगे मजे मजे में। मैं देख रहा कर दो 69 हो जाएंगे ऐसे कैसे। 1 लाइक रिमेनिंग फॉर 69 लाइक्स। चलो टेक पॉइंट मिल गया अपने, निकलते हैं यहाँ से। टैक्सी चलेगी? What's up? That's curious. Stop! Surrender yourself. Failure to comply will result in extreme measures. What was that? Halt! Failure to comply will result in forceful intervention. इनकी गाड़ी लेकर निकलता हैं। Warning! Continuing Suspect reported in your area. Potentially armed and hostile. Call an ambulance to my location. I'm in pursuit of the target. बेचारा ड्रोन। What is this roadblock? Suspect has crossed the checkpoint. Over. Control, I can't see the suspect. Please advise. Deep breath. Hey, what's up, journalist? Pursuit खत्म तो हो गया pursuit. I'm terminating the search. Fall back. Over. Heard you need some help. What's up? You're the crew that's been sticking it to Albion? Can't believe someone else is. Thought I was alone, right? Not doing much, just putting the word out. But you? Taking action, mate. That's how it's got to be. Do you know what I mean? Otherwise, Albion gonna get bigger and badder, and then it's too late. So what's up? Almost got clip finding this. All of Albion's operational data for the entire city. Convoy routes, surveillance targets, assets. It's all there. Thinking you can make good use of that. You bet your ass. Here's a sample. Albion's closed King's Cross to the public, right? But what people don't know is that they're using it as their logistics centre. Materials, troops, whatever. A lot of it runs through there. You want to give the people a huge boost? Hit that place. Put it out of commission, and you'll severely hamstring Albion's operations here in Camden. Hell, everywhere. We got us a plan then. रणदीप तो इंडियन के लग रहा है, गेम में इंडियन ही है ये भाई। टेक पॉइंट से अंदर भी है, पर अभी हम अंदर जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ 50 मीटर दूर मिशन हमारा मेन। Albion's operational plans are just what we needed to really get some traction. We'll have to take a close look at this. Now, how do we take King's Cross offline? Albion's housed a map. Jai Shri Ram Baba, Jai Shri Ram bhai Noxashu. They've locked it up tighter since I last saw. The fuck do I do? My news drones are still in here. They should be functional. You can use one of them. Probably have better luck piloting it too, yeah? मुझे यहाँ पे कुछ तो हाईजैक करने को मिलना चाहिए। हाईजैक अ न्यूज़ ड्रोन। ये रहा। oops. I actually didn't want it to do that.
हाईजैक नहीं कर सकता मैं। Okay, nice. You know what? Here. Well, causing a power surge in a hybrid powered generator isn't like making a toasty. We're going to need detailed specifications. Alright, let's check that shit out. Yo, yeah man, look at this. Cool, looks bloody complicated. News he's got a pretty functional camera. Would a picture do you, Bagley? It would indeed. According to this, there's an override code that'll get us into the generator's system. Oh, what is this? Happy Diwali भाईजान, love your Baba Dil. अरे आत्मनवर भाई, thank you very much for the 40 rupees super chat, bro. Oh no. Time before reset नहीं. कौन देख रहा था मुझे इधर? That's it. Use the code on the generator and I can trigger a power surge. It should be enough to take King's Cross offline. And the rail system too. Here we go. ओ भाई फटने वाला क्या है? Holy shit! पटाखे दोस्तों! We got a gold mine of information out of St. Pancras. Albion convoys, informants, gear, you name it. Everything we need to ignite the people of London, like we did in Camden. Derail Albion's operations and give the people a reason to rise up, borough by borough. The more we do that, the more we'll get allies flocking to the cause. We'll show London that DedSec is here for them. भाई Ubisoft की second game है लंदन में. इससे पहले Assassin's Creed Syndicate थी. That was off the chain, mate. I knew DedSec weren't the bad guys Albion was saying. Now the rest of Camden will too. Thanks. Thanks. Now that you've shown the borough what DedSec is really all about, there are going to be folks wanting to join up. A lot of people have been looking for a way to fight back. In fact, there's one in particular I suspect will contact you very soon. I happen to know they're champing at the bit. Fuck yeah. Atman मेरे भाई, thank you very much for the 40 rupees super chat and happy Diwali मेरे भाई. तो हमारे पास गाइस अब एक second operative आ गया. DedSec में. Borough uprising rewards, DedSec support, tech points, skilled recruits. Borough is defiant. Recruited. देखो नया recruit आ गया अपने पास. Start recruitment. Sorry, got Albion to deal with already. Oh, excuse me. Sorry. Well, fuck me, you're still alive. I owe Sabine a tenner. Not only that, but your resistance handiwork just opened up a whole new source of information. So now I spy with my hypothetical eye something interesting at the Ministry of Civic Management. And what is it? The Signals Intelligence Response Service, or SIRS, or the Earl Grey Gestapo, have developed a surveillance technology called AR Reconstruction. It's the bleeding edge of privacy rights violation, and thus it could be very useful in our attempts to find Zero Day. Recruit Randeep Pandey. Oh, Max, but what's his deal? Albion just placed him under severe data restriction. Why? Well, he's been looking into a couple of their field officers' dodgy side projects. You know how Albion feels about transparency. Oh, that's shady, innit? Let's see what's scaring the PMC so bad.
Right, pushing you the coordinates of the personnel in question. Investigate at your leisure. That's pretty much the opposite of what our prospect would have wanted. Oh well. Calling off the pursuit. Over and out. बाबा तेरे हिसाब से बेस्ट पार्कोर एक्सपीरियंस कौन सी गेम में है? Mirror's Edge, Catalyst. Also Assassin's Creed, Unity actually. Unity का पार्कोर बाप रे. Box parcel courier tutorial नहीं करना भाई. The demands of being a DedSec operative are all consuming, so taking app gigs is a good way to make some extra quid that works around your new schedule. Lots of people will pay well to have their sensitive packages handled with care, and some will even pay you for deliveries. Ha ha! ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है भाई? ये रास्ता है, ठीक है? ये पाइप चढ़ेगा? हाँ, इधर चढ़ गया, इधर नहीं चढ़ रहा क्योंकि तो चढ़ के इधर कूदना चाहिए, फिर वहां से वहां एकदम स्ट्रेट रास्ता है, बट जा ही नहीं रहे. स्पाइडर बॉट, ब्रो तू क्या करेगा? स्पाइडर बॉट वहां चढ़ के जा सकता है, मैं नहीं तो. अलग कितना मतलब गलत एनिमेशन है इसका, देख रहे हो? भाई 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 ना कूल है बे. फ्लावर पॉट, वेंट, नाउ वेयर? उधर वाली वेंट. उफ क्या यार, क्या घंटे का स्पाइडर बॉट साला, अगर दीवारों पर नहीं चल सकता तो. आपको पता है इंडिया से हूँ. कौन इंडिया से है भाई? बहुत तेरे हिसाब से ओके तो पढ़ लिया था मैंने. ओ भाई नीचे गिर जाता ना भी साला. तेरी माँ, नीचे मत गिरियो. नीचे नहीं जाना भाई, कुछ भी हो जाए नीचे नहीं जाना. हाँ बस इधर ही अंदर टेक पॉइंट्स उठा ले. लेट्स गो बैक टू पापा. ओ तो मैं इन्फिनिट बुला सकता है. बाइक लेके चलता. Welcome back to The Upload. Today we're talking about cryptocurrency. Crypto now seems like it's been around forever, but it's really quite a new invention. Were you an early adopter? I was one of the first that was in this market. That seemed to be... If you're feeling out of your depth or like you could use a breather, you can always call on your new teammates to step in. It's your call. That's the advantage of working together instead of alone. Yo, man's live on the scene. In theory, the AR reconstruction should allow me to use various sources of surveillance data to rebuild past events. Access a data relay, and I can scrape all the metadata for this area. इधर जाने का अपने को. But I have to get past this. स्पाइडर बोर्ड बुला सकते हो मैं आसपास कहीं से? क्या ये?
है ना 3 से स्पाइडर बॉट। आहा ये बात। But do I hack this? इधर से। That's it. Now, let's take this autocratic wet dream for a test drive. Launch AR reconstruction test. But from where? बस ये दो कंट्रोल के जंप एंड एग्जिट। आई थिंक मुझे अंदर जाना पड़ेगा इस तरीके से। मुझे ये बंद करना ये डोर्स डिसेबल है ना बात। CTOS AR data reconstruction in progress. Fuck. The future's fucking now, blood. You're right. We definitely need this extremely cool thing I want for investigating Zero Day. Shit! For some reason I can't clone it to our servers. All right, access the network here and let's see if we can't find out where to nick one. भाई कितना कूल है बे। मतलब कि ऑगमेंटेड रियलिटी में अपने को सबको नजर आ रहा है जो यहाँ पे पहले हुआ था। Located the CTOS hub. Deploying rootkit. Aha! The SIRS has deployed this technology at their HQ, and I've just nabbed their manual on how to set up the system. Now, Scarpa, you can't steal their toy if they throw you in the gulag. Bags, bruv, I want this AR tech. What do I got to do to get it? The program is hosted on a server that's on the roof of SIRS HQ. All you have to do is grab the whole thing, then take it to a few high-density locations so I can recalibrate it to the DeadSet network and clone my own version. Oh, you mean I'm getting the server off the fucking roof? Yeah, bro idea. We need to find someone with access to a cargo or construction drone that can fly it off of there. Perfect opportunity to recruit a heavy lifter to the cause, I'd say. So we want a heavy lifter, innit? What does that mean? Well, let's put our thinking caps on, shall we? Now, who in London would have access to a construction drone? Could it be a construction worker? Drone use करना अरे पता नहीं था मुझे कैसे use करना. Shit, Bags. Not so hard, was it? There's an active construction yard nearby. I dare say you'll probably be able to find a construction worker to recruit there. Here's the coordinates. Forces of darkness he unleashed with that speech changed everything around us. Was Sasani's rise inevitable? Could it have been stopped? And what happens when democracy starts to breed the ideas that can destroy it? Using back channels and underground contacts, we got in touch with political analysts and historians to find out how it's possible for cynical, short-term leaders like our beloved Prime Minister to give birth to political madness. No full name, as you know. These days, telling the truth can get you killed. Helen spells out the dangers of populism from major political magazines and websites back in the pre-censorship days. You hear a type of politics is about strongmen, and they Recruit a construction worker. because it's about saying there are simple problems that are really... Yo, you look like you could play a part in taking back London. Wait, are you with DeadSec? I just so happen to need some help. We'll see what we can do. What's up? I'm in debt with Clan Kelly. They paid for some medical expenses on my behalf, but they keep jacking up the interest rates. I'm basically an indentured servant at this point. Set me free from them, and I will make it worth your while. Alright, cool. Yeah, man's got this on lock. ठीक है, वो तो ऐसे recruitment होती है. See that in the rhetoric around immigration. If you say immigrants are probably
Recruitment mission started. Recruit Joseph Clan Datta. Kelly will bleed our new friend dry if we don't do something. This particular construction site is a money laundering front for a Kelly chapter out of Camden Market. Any record of the debt would be stored there. Alright, cool. What's up, bro? Nice bike. This is London Calling. I'm Tash, and you're listening to Buccaneer, your source for what they don't want you to know. Today we're talking about Dev Hassani, our gone, but sadly not forgotten Prime Minister. It's strange to think that he was just another here today, gone tomorrow politician until his infamous London is drowning speech went... Fuck, the Kellys got the place shut down. The size of this operation is mad. When did Clan Kelly get so big, bruv? You're looking for a terminal or some kind of device that Clan Kelly would have stored the debt records on. Got in touch with political analysts and historians to find out how it's possible for cynical, short-term... बुड्ढी आंटी को भी recruit कर सकता हूँ. Prime Minister to give birth to political nightmares. इसको recruit नहीं कर सकता. सबको recruit नहीं कर सकता. मतलब जो like-minded people है बस उन्हीं को recruit कर सकता. Don't have the right tool for the job? You can exchange your gadget for a different one that's better suited to the situation. That gives me an idea. मुझको अब मेरा ड्रोन यूज करना चाहिए. ड्रोन कैसे यूज होता? टेक. Chase drone hacks. Oof. बंदूकें भी रख सकता हूँ मैं. Can often feel really complicated and confusing, and they do on the whole seem to offer action instead of... ड्रोन कैसे निकलेगा इसका? Okay, now let's see. I think I'll do a wider shot for this. 1 second. Maybe under the bridge जाने का अपने को. Yep, I guess मुझको वो यूज करना पड़ेगा. ड्रोन. हैप्पी दिवाली सौरभ गेमिंग. ड्रोन यूज करना. हाँ मैं वही देख रहा हूँ ड्रोन कैसे यूज होता है. टेक टीम ये है गैजेट. इसका रिप्लेस करना मुझे ड्रोन से, बट ड्रोन यहाँ दिखाई नहीं रहा. ओके रहा ड्रोन. और से हाउ डू आई यूज इट? 9 for camera, 0 for gallery, 12 for photo mode. अच्छा ये रहा. Right, you can erase all record of that debt, putting our new friend back into the black and, more importantly, out of Clan Kelly's reach. Fucking banger. लूजिंग सिग्नल होने वाला. चलो अब हो जाएगा. Transfer complete. Easy. ये लो गाइस ड्रोन यूज हो गया अपना. सेक्सी. जोसेफ दत्ता recruited. Hey, yo, good blood. No more Clan Kelly debt. We freed your ass. Fucking lovely. You're not bad for a group of alleged terrorists. Why don't you join DedSec? You know you wanna. All right. I'm in. Let's have some fun. भाई यहाँ पे सारे मिक्स ब्रीड हिंदू है, कन्वर्टेड इंडियंस. पैसे दे.
पैसे दे पैसे दे Let us talk. तू बाइक दे दे काम कर ओहो वीट वन वीट जोसेफ दत्ता This is London Calling. I'm Tash and you're listening to Buccaneer, your source for what they don't want you to know. Today we're talking about Dev Hassani, our gone but sadly not forgotten Prime Minister. It's strange to think that he was just another here today, gone tomorrow politician until his infamous London is drowning speech went viral. The forces of darkness he unleashed with that speech changed everything around us. Was Hassani's rise inevitable? Could it have been stopped? And what happened when democracy started to breathe the idea and destroy it? Using back channels and underground contacts, we got in touch with political analysts and historians to find out how it's possible for cynical, short-term leaders like our beloved Prime Minister to give birth to political nightmares. उठा नहीं सकता वैसे इससे As you know, these days telling the truth can get you killed. Helen spelled out the dangers of the many political magazines and websites back in the pre-censorship days. The appeal of fascist politics is about strong men, and they aren't usually men, because it's about saying there are simple problems that are really easy to define, say immigration. Facial recognition is fundamental. And they are really appealing because they make... This is London Calling. I'm Tash and you're listening to Buccaneer, your source for what they don't want you to know. Today we're talking about Dev Hassani, our gone but sadly not forgotten Prime Minister. It's strange to think that he was just another here today, gone tomorrow politician until his infamous London is drowning speech went viral. The forces of darkness he unleashed with that speech changed everything around us. Was Hassani's rise inevitable? Could it have been stopped? And what happens when democracy starts to breathe the ideas that can destroy it? Using back channels and underground contacts, we got in touch with political analysts and historians to find out how it's possible for cynical, short-term leaders like our beloved Prime Minister to give birth to political nightmares. No full names, as you know. These days, telling the truth can get you killed. Helen spelt out the dangers of populism for major political magazines and websites back in the pre-censorship days. The appeal of fascist politics is about strong Oof! साले को इतना दूर का पपी मिला था यार मुझसे मिलने के लिए And they are really appealing because they make sense of a world that can often feel... Guys, attendance लगाओ chat में मुझे देखना भी कितने लोग देख रहे हैं This is London Calling. I'm Tash and you're listening to Buccaneer, your source for what they don't want you to know. Today we're talking about Dev Hassani, our gone but sadly not forgotten Prime Minister. DedSec resurgence have prompted Parliament to approve the use of lethal force for Albion contractors. CEO Nigel Cass had this to say. DedSec terrorists will quickly find that Albion, unlike the police force of this city, is battle-tested and proven in the field. The Prime Minister's office has called this shoot-to-kill mandate a drastic but necessary... Hell of a time to join up. Here, your new kit. This is the turning point, right? My normal life gets fucked. All just to join the DedSec party. Yeah, but what's normal, though? You wake up and the feds can bag you for looking funny. I know everything's fucked, and I know it has to change. I have a lot to give up, you know? You ain't giving it all up. You're fighting to protect what's yours, do you hear me? Right. Okay then. I'm ready. Welcome to the Resistance, blood. हमारा न्यू ऑपरेटिव आ गया हमारे साथ हेवी लिफ्टर Right. Welcome aboard, etc., etc. I'll give you the speech later. Right now, we need you and your big, strong drone friend to get on top of SRS HQ and steal a server. Think you can handle that? Heading there now.
स्क्रैच गर्ल और डार्क साइड ते बनी बस। दस का व्यू बॉट स्ट्रीम पे। Makes sense. Well, here I am. I'll highlight the server with the AR reconstruction software. It's out of reach, so you'll need to use a heavy cargo drone to steal it. Standard quadrant search. I have this one. Drone, initiate search. Yeah, आ गया। हेलो बाबा, कैसा हो? बढ़िया भाई। कृष्णा केजरीवाल। How do I attach it? Oof. पीछे गैप कर लिया उसके। तो रखने का मजा। The server's been loaded into your vehicle. Off you go now. Quickly, but not too quickly. Wouldn't want any accidents. Blood, I'm like the best driver ever. No. ये क्या? AR reconstruct. CTOS AR. Data reconstruction in progress. This will do. Remain in the area until I've downloaded enough data to the server. Download complete. I need a wider sample of data, so I'm pushing you the coordinates to a new location. यहाँ पे हम CTOS की टेक्नोलॉजी चुरा रहे हैं, वो स्कैन कर करके। This is brilliant. Look at this. It's compiling data from the surveillance infrastructure. Nearby CTOS drones, civilian optics, CCTV, and then it assembles those scraps into what happened in this location 24 hours ago. Fantastic. भाई ये तो कुछ डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन वाली बकचोदी हो गई भाई। डिट्रॉइट बिकम ह्यूमन में भी एंड्रॉइड्स ऐसे देख पाते थे क्या हुआ क्या नहीं। फैज़मोफोबिया कब खेलोगे भाई? जब उसका कोई ढंग का अपडेट आएगा। मेरे दोस्त बोर हो गया खेल के।
CTOS AR. Data reconstruction in progress. All right, scraping data from optics, CTOS cameras, microphones, laptops. Say, do you reckon SRS uses this to watch people shag? Fucking hell, do they use it for anything but watching people shag? Oh shit! We got us a clash now, Bags. Well, shit, can you do anything to lose your new friends? Maybe invite them to a pottery night or overshare something personal. Whatever you do, just get to the last location in one piece. Motherfucker. Alright, cool. Transfer complete. I'm missing one last data set. Pushing you the coordinates to the location now. चलो अगले जगह चलते हैं अब. प्रॉपर 13 का व्यू बॉट लगा हुआ है. 13 का नहीं, 10.5 का. तो बाबा हैप्पी दिवाली भाई. किलर सुख. चलो यहाँ से डेटा डाउनलोड करते हैं हम. CTOS AR. Data reconstruction in progress. ओ भाई. Our bags, I can't shake these fucks. Don't let the drones destroy the server before I'm done. Get out of the lorry and take care of them. Shoot them, throw rocks at them, destroy them psychologically with cyberbullying. Just keep them busy until the transfer's complete. भाई ये डाउनलोड इतना टाइम क्यों लग रहा है? भाई इसको पोल ने बचा लिया इधर से. ये डाउनलोड इतना टाइम क्यों ले रहा है यार? Almost done. All right, I've got it. Now, we can't lug around this server forever. We should probably wipe our prints off it anyway. I'm listening. I'll overload the CPUs to cause a power spike and destroy the battery unit. The electromagnetic pulse should destroy both the server and the drones. So, you know, run. Oh shit! Nice. बहुत हार्ड. बाइक देखो उसकी. Nice.
निकलना पड़ेगा यहाँ से। हाँ बाबा, हैप्पी दिवाली केजे गेमर। यार तुम सब लोग यार, मतलब जब तक मैं कुछ बोलूँ ना तुम लोग आते ही नहीं यार चैट में। We pulled off a heist, made life a bit harder for the tyrants of the world, and most importantly, I got a new toy to play with. Now, run along back to the safe house. Sabine wants you and your new teammates for a briefing. I guess इसके साथ हमारा गेम का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता, क्योंकि हम सेफ हाउस बुला रही है ना ब्रीफिंग के लिए। कोई कट सीन वगैरह आएगा और समय आगे पता चलेगा हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या रहने वाला आगे। We have to take back London. पानी में चलेगा भाई? नहीं। तैर सकते हैं पर इधर क्या है बीच में मारकर? हैक ETO points, ET 0 points. Our stream quality super compressed जा रही, like the image looks soft on your stream today. भाई वो तो आएगी, पता कितना ज़्यादा मतलब लोड पड़ रहा है मेरे सिस्टम पे। एनवेंक को बिल्कुल रूम ही नहीं मिल रहा ब्रीथ करने के लिए। हालांकि 1080p पे चल रही है गेम अभी हाई सेटिंग्स के साथ। गाड़ी दे दो दोस्त, तुम रुक जाओ भाई, तुम्हारी गाड़ी अच्छी लग रही है। आप पीछे भी चले जाओ। वेरी नाइस। ए रुक, अबे रुक जा। मैं वो नहीं करना चाहता था बट ठीक है, हो जाता। Search the area. Someone's hacked this vehicle. Oh, chill. कार चोरी है। मैं रिक्रूट ही नहीं करूँगा तुम लोगों को, नूबड़ों को। बिग फैन भाई, सही है गोमो। Reporting for duty. Answer the call. Well done, team. It's good to see the safe house filling up again. The only way we're going to keep London from falling into total oppression is by rebuilding the resistance. We need to recruit, train, build back our arsenal. The people are itching to rise up and take their city back. We just need to show them that DedSec are fighting along with them. Hey, I'm hyped, mate. Let's take it to them power mongers who've ruined London, you get me? I'm sure Albion's turning a tidy profit. Those cunts are treating London like a hostile takeover. Meanwhile, Clan Kelly has risen to the top like rotten cream. They need to be brought down. Fair, but remember that this zero-day hacker group is still out there. They took out DedSec once, and it's a good bet they'll try again. I believe they were responsible for the bombings and framed DedSec. With your help, I plan to get to the bottom of this mystery. I'd say that's a full docket. Enough talk. Let's unfuck London. Let's unfuck London, guys. Happy Diwali, Gomu. अभी आ रहा हूँ डिस्कॉर्ड रहा तो guys, permadeath is now active. If all operators are unavailable, the game will end.
ओह शिट, तो अपने को ऑपरेटर्स रिक्रूट करते रहना वरना पोपट हो जाएगा। अभी मैं स्ट्रीम करो ये पर एंड, गेम को कंटिन्यू करेंगे हम कल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, आई विल सी यू गाइस टुमारो। जाओ सो जाओ, भी ऐश करो, हम भी करेंगे और मिलूंगा तुम लोगों से कल। हैप्पी दिवाली गाइस, गुड नाइट।